Yes, now my mic is working. So, hello guys, welcome to the stream. It's day 3 of solving Fraz DSA Sheet in 50 days. We have already solved 12 questions, so we'll try to solve some other questions. Today we'll be solving questions on sorry. Yeah. So today we are planning to solve questions of hash map and sets. Before starting solving the questions, I would do one thing. Hash map in Python. We'll just go through the basics of hash map and what is a hash map is built into the language is called a dictionary. A hash map stores key value pairs and lets you insert, lookup and delete items in average of one time. Okay, something like this. Creating a hash map or dictionary, simple empty hash map will be like this. Using dictionary like this, and with initial values it will be like this. Adding and updating values, add, okay, adding and updating is same. We just need like for if we are doing it for the value which is already there, then it would be updating. Accessing value hm of a 10. See for access no key error hm.getx getx comma 0 default value. Removing values, delete, simple, value is equals to or pop. Checking existence if c in hm print key exist. Simple, iteration over a hash map for key in hm print key, for value in hm.values print value, for key value in hm.items print key and value. This would be useful. And example use case, counting frequency of elements 1 2 3 frequency for n in nums, for n in nums with frequency of n is equals to frequency dot get n comma 0 plus 1. Okay, so for that particular number जितना पहले से स्टोर होगा वो हम गेट करेंगे और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहेंगे, अगर नहीं होगा तो एंड उसमें +1 करके स्टोर करते चले जाएंगे. Key must be hashable, integer, string or tuple. List in dictionaries cannot be keys. Python dictionaries preserve insertion order. Okay, if you want I can also explain how hashing works internally, time complexity details, default dictionary and dictionary hash map and coding and interviews. Just no, I think that's enough just for the basics. Sets in Python. Let me just create a blank file. It's 16 December. Or I can remove the extension. I can make it the text file also. Yeah.
A set is built-in data structure that stores unique unordered elements. Okay, creating a set as equals to set empty with values. It will be something like hash map, like curly braces. Form of list, duplicate removed, 1 2 2 3. Okay, directly pass the list inside the set. Okay, no duplicates, unordered, no indexing, very fast, membership checks of one average, elements must be hashable. Add, update, remove and discard, remove, no error if missing. Okay, there is error if missing. Checking membership, if 2 in S, then we'll just simply print exist. Set operations very important. A 1 2 3, B 3 4 5. A or B, it's a union 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. It will be a set, so all the values will be unique. And B intersection, same value. Minus B, which are there in A but not in B. That would be 1 and 2. Like 1 2 simply सोच सकते हैं minus b is equals to this minus this, but 1 2 3 minus 3 4 5, 3 से 3 कट जाएगा, but we won't take these values. Symmetrical difference 1 2 3, 1 2 4 5. Yeah, that's the difference. Method evaluation, union intersection difference, symmetrical difference, simple iterating over a set. Items, no guaranteed order. Remove duplicates from a list. Simple. From common element, a minus b and is intersection, right? Yeah. Frozen sets, immutable sets. Okay, they cannot add. So कुछ basic important चीज़ें हम, एक तो ये और adding and updating values not required, printing is not required, this part. And this part. Creating and just adding important things so that we can check them later if we need.
फ्रोजन सेट्स की नहीं ज़रूरत पड़ेगी आई गेस. Okay, so this is dynamic programming and this one is also dynamic programming. Majority element. T3. It's an easy question. Given an array nums of size n, return the majority element. The majority element that appears more than n by 2 times. You may assume that the majority element always exists in an array. Okay. हैश मैप एंड सेट्स से लिखा है तो why I am not logged in. Let me log in again. So इसमें हम हैश मैप्स का ये वाला पार्ट यूज़ कर सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी वाला. हमें नम्स दे रखा है, राइट. हम एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेते हैं जिसके अंदर प्रिंट नहीं करना हमें, और ये इधर आएगा एंड इन नम्स डायरेक्टली नम्स में जाएगा. फ्रीक्वेंसी ऑफ गेट एन 0+1 डायरेक्टली हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. एंड इसके अंदर या तो हम लेंथ को स्टोर करके n/2 से चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम n/2 से चेक कर सकते हैं. एक ही बार करना है तो why we need to use that. लूप ख़त्म होने के बाद ही कर सकते हैं. if frequency dot get n, 0 is greater than length of nums divided by 2. Then just simply return n. I'm not sure if it will work or not, but in this case it's working. Let's try. Yeah, let me explain you guys. And I'm not sure like previously I did it like this or not. I did it long time back. Yeah, it's also an efficient method. I did it simply. I'll explain you both the things. So we have this array, this list, and we have to tell which number is there will be one number always which will be more than n/2. So what I have done in this approach is I have simply sorted it. Let's sort it. 1 1 1 2 2 2 and 2. All right, and length will be
and let's suppose n is length 1 2 3 4 5 6 7. So n by 2 is 3.5, greater than 3.5. Okay, that means roughly greater than 3, because for even we'll also get, if it is 6 then also we'll need 4. Nums.sort n is equals to length of nums, return nums of n moduled by 2. That is, so n double, not module, double forward slash, it will be 4. So what we have done is, see, 1 2 3 4 5 and 6, we are returning element in the nums which is, sorry, I think n double divided by 2 is, I think, let me just check once again. I got, if n is 7, then n double divided by 2 is 3, right? Yeah. So for this, n is 3, and see, what our question is saying, element which is having more than n by 2 values, that means we need at least 4 values. So आप खुद ही सोचो, अगर कोई एलिमेंट n by 2 वैल्यूज से ज़्यादा है, तो जो n by 2 उसका जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे डेफिनेटली वही होगा ना, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो. अगर ये 1 भी होता, तो अगर नंबर ऑफ वो 1 ज़्यादा होते तो भी ये यहाँ पे 1 होता, एंड अगर 2 है तो भी ये यहाँ पे 2 है. सो सिंपली इसका मतलब ये है, हमें अगर n बाय 2 से ज़्यादा वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सो इन दैट केस जो भी एलिमेंट एट द मिडल होगा, n बाय 2 पोजिशन पे होगा, nums of n double divided by 2 would always be that value which is more than n by 2, which is at least 4 times, and the output is 2. So that was the approach which I have used there. But now what is the approach I have used? I'm using the same array. This is not needed now. Nothing is needed. Yeah. Let's say this is the array. Let's go one by one in code. N in nums. Frequency of n would be whatever frequency is already there plus 1. So we have created a frequency hash map which will have values for 1 colon something comma 2 colon something. I'm giving you this is the final value which frequency will be having. So what we are doing here is we are getting this value for n, means for 1 and 2, because for this particular example I'm taking 1 and 2. We are getting whatever currently value is and adding it to it. As soon as I get the value which gets higher than n by 2, I'm returning that particular value. Simple. It's very simple. As simple as that. So as soon loop will run until here only. It will not even go to this last part. As soon no, it will go there because we need it for 4. But in this scenario, in some other scenario, it will just simply go. Let's suppose if there are 4 2s here, then 1 1 1 is there.
then it will only run for 4 times and it will return n. So yeah, that's it. Worst case, we have to go for all the things, but it will be O of n, and I'm just using this frequency to store O of 1 constant space. So yeah, that's it. This one is done. Refresh. Okay, somehow Codolio. Majority element. Sorry, it's done. Next is Fibonacci number. It is Fibonacci number recursion से भी कर सकते हैं, but अभी I'm thinking of taking only hash map and sets question today. So let's go ahead. This is also dynamic programming. Insert, delete, get random value, hash map and sets. Okay, let's try. Insert, delete, get random of 1. Implement randomize set class. Initialize randomize set object. Okay. We need to define these 4 to 5 functions. What we need to do? Input is randomize set, insert, get random, remove, insert, get random, and randomize set output is null, insert true, false, here true, and then we get the random value 2, true, false, true. I don't like this question. अभी मन नहीं कर रहा. करेंगे अभी नहीं कर रहे. Sub array sum equals k. Given an array of integers nums and an integer k, return the total number of subarrays whose sum is equal to k. The subarray contains non-empty sequence of elements within an array. So this will be the subarray and this will be the subarray that can have output as 2. 3, 2 plus 1, 3, and this is alone 3. Now this is tricky, and this question has to be solved hash map and sets. Let's think about it. Subarrays. Sum equals k for each subarray. अगर हम यही फ्रीक्वेंसी वाली अप्रोच यूज़ करते हैं तो इन दैट केस जो भी हमारा टारगेट होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट प्लस हैश में सेट से कैसे होगा. मैं नॉर्मली सोच के देखता हूँ पहले ब्रूट फोर्स से. हम सारी सब एरेज लेके सबका सम करके चेक कर लेंगे. इफ इट इज ट्रू देन वी विल रिटर्न सिंपली दैट, बट दैट्स नॉट द करेक्ट वे. We need to check the sub array.
सोचो सोचो, सब एरे का सम टारगेट के बराबर हमको चाहिए। हम्म, अगर सब एरे इन कंटिन्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस मींस लगातार या फिर वन एंड वन? आई थिंक लगातार होगा। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी 1 2 3 and 1 2 3 1 3. Okay, yeah, I was right. अगर हम सॉर्ट करके करेंगे तो जो उससे बड़े एलिमेंट्स है वहां से आगे तो लूप जाना ही नहीं है। Let's try a few things. Nums dot sort and after that while and I sorry nums at I is less than target, that is k. ये तो n स्क्वायर में होगा सॉल्व यार, फिर क्यू आर 4 एक्सेप्ट भी हो जाएगा 10 क्यू आर 8 तक, बट इट्स नॉट अ गुड वे यार, आई डोंट थिंक। लेट्स सी, ऑप्टिमाइजेशन करने का ट्राई करेंगे, बट पहले एक बार सिंपली सॉल्व करके देखते हैं। लेस देन तो उससे हो गई, एक वेरिएबल ले लेते हैं, करंट सम इक्वल्स टू 0 एंड एक और while लूप चला लेते हैं जब तक करंट सम इज लेस देन k। तो if nums of I plus current sum it is greater than नहीं, अगर बराबर होता है k तो फिर आंसर
plus equals to 1. 1 second, guys. I'm back. आंसर में +1 कर देंगे अगर स्केल के बराबर हो जाती है तो। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं, उससे पहले नहीं, बाद में करेंगे। करंट सम प्लस इक्वल्स टू नम्स एट आई। Let's see if it works. Index out of range, how come? अच्छा, अगर कभी नहीं होता है तो nums at I should be less than length of nums। अच्छा, भी छोटा होना चाहिए कैसे भी। अब तो नहीं आनी चाहिए।
आउट ऑफ रेंज तो नहीं आना चाहिए यार। आई अभी भी गलती है। लूप में करंट हम थोड़े ना कैसे छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी अपने आप ही। एक बात सोचो, करंट तो पहले से ही बड़ा हो जाएगा ना। ये कैसे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो सकता है? ओके, एक केस में हमारा आउटपुट आया, बट दूसरे केस में
इसको 1 2 3 पे ट्राई। एक बार चैट जीपीटी को दे के पूछ, fix this don't give our approach, just fix I and answer 0. Okay, while I is less than nums, j is equals to I, current sum 0. Same, j is less than nums, current sum is equals to current sum plus j. हाँ, ये भी मैंने बेवकूफ़ी करी। बेसिक सी चीज़ है इसमें, ये इस वाली कंडीशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और ये भी ज़रूरत नहीं है। अगर करंट सम को मैं डायरेक्टली चेक कर लेता हूँ तो ठीक है, सोचा ठीक। एक बार चैट जीपीटी से पूछते हैं। ओ सब एरे मस्ट बी कंटीजियस, ये तो मैं भूल ही गया था। करंट सम ऑलराइट। This is hash map 0 1 count 0 prefix 0 for num in nums, prefix sum is equals to prefix sum plus num. If prefix sum minus k in scene, count plus is equals to scene of prefix sum minus k. Scene prefix count, बट इसमें हम ये कहाँ चेक कर रहे हैं कि जो सीन प्रीफिक्स हम
पर एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. बेफिक्स हम क्या फ्रीक्वेंसी आ रहे बना रहे हैं. ओके. समझ तो गया मैं, बट इस क्वेश्चन को हम कल को एक बार फिर से अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे विद दिस अप्रोच. Generate the characteristics of that problem such that we can know what kind of a problem can be solved by 2 pointers. यार ये मैंने किया हुआ है क्वेश्चन, काफ़ी टफ है. Pair of songs with total duration divisible by 60. You are given a list of songs where ith song has the duration of time of I sorry time of 5 seconds. Return the number of pair of songs for with their total duration in seconds is divisible by 60. Formally, we want the number of indices I, j such that I is less than j with time of I plus time of c is equals to 0. Input time is equals to 30, 20, 50, 140. Output 3. Explanation: 3 pairs have a total duration divisible by 60. 30 plus 20, 50 not divisible. 20 plus 150, 170 not divisible. 250 not divisible. 140 not divisible. 190 not divisible. 120 divisible, yes, it is divisible. 180 is divisible.
30, 120. Yeah, these were. Two 50, 40, 90, 246 was the 24. Okay, pair means any two. पेयर निकालने हैं सारे n स्क्वायर में तो इजीली हो जाएगा. इसके साथ सबका पेयर चेक करते रहेंगे एंड डिवाइड बाय 60 इज इक्वल्स टू 0 मॉड्यूल बाय 60 देन पेयर बन रहे हैं 30 और 150 का. तो आई जब इस पे होगा तो ये इससे चेक करेगा इसमें. इफ टाइम आई
That's the problem. Yeah. अरे यार, I'm not sure. हाँ, ये तो मेरे को पता ही था, बट ऑप्टिमल हैश मैप और सेट्स का यूज़ करके क्या ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं इसमें हम? हम्म सोचते हैं पहले, फिर देखेंगे। अभी मैं बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँगा नहीं इन क्वेश्चंस पे। इन फ्राज शीट में मैं ज़्यादातर, मेरा पॉइंट है कि मैं हर एक टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाऊँ। लाइक हर एक हैश मैप, सेट्स, डीपी, ग्राफ, ट्री, इन सब के क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाए मेरे को तो मेरा टारगेट ये है कि इस वाली शीट्स में बहुत ज़्यादा टाइम ऑप्टिमाइजेशन में इन्वेस्ट नहीं करके मैं इनको ऑप्टिमाइजेशन सीखूंगा। लाइक यही चैट जीपीटी और फ्रॉम सम वीडियोस और समथिंग, एंड उसके बाद मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करूंगा, लाइक 455 क्वेश्चंस ऑफ स्टाइवर डीएसए शीट। वो सॉल्व करेंगे हम लोग 50 डेज में ही, सॉल्व करेंगे उनको भी, उन क्वेश्चंस में। इफ आई एम नॉट श्योर 50 डेज, बट आई विल थिंक अबाउट इट, कितना टाइम मैं दे पाऊंगा उस टाइम, उसके हिसाब से कितने क्वेश्चंस पर डे करने रहेंगे एंड कितना टाइम कमिटमेंट मेरे को डेली देना रहेगा, तो उसके हिसाब से मैं सोचूंगा। एंड उस टाइम पे हम लोग ऑप्टिमाइज अप्रोच के लिए हम लोग यही ट्राई करेंगे कि हम कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना देखें। वी विल ट्राई टू डू इट ऑल ऑन आवर ओन। दिस सीरीज इज जस्ट टू लर्न द बेसिक्स एंड हाउ दीज क्वेश्चंस आर गेटिंग सॉल्व्ड। आई लाइक थोड़ा सा माइंड में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। सो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग सारे खुद के, मतलब लाइक ऑप्टिमाइजेशन का ऑब्वियसली इसमें भी हम ट्राई करेंगे जब तक हम, बट बहुत सारा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि हम अगला क्वेश्चन कर सकें। हैश मैप में सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करके कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सेट से भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा मेरे को, इनसे तो नहीं समझ आ रहा है।
ये कैसे ट्रू है? पॉइंट 5 और ये भी 30 वो भी 30। अच्छा दोनों का रिमाइंडर 30 आएगा, तो जब भी ये पॉसिबल होगा तो in that scenario समझ गया मैं। अभी बताता हूँ। कुछ नहीं है, हमने मॉड किया जिसका भी रिमाइंडर मतलब लाइक कॉम्प्लीमेंट रिमाइंडर जो होगा वो भी मतलब लाइक अगर सेम होगा तभी हम उस फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे और रिमाइंडर का ऐड। तो जो हमारा आंसर होगा वो सिर्फ उन्हीं के लिए लेगा जिनका सेम रहेगा मॉड्यूलस। तो उन फ्रीक्वेंसीज का जब वो वाले पेयर उन दोनों का सम जब 60 के मॉड्यूल में आ जाएगा तो दैट वुड बी ये रिमाइंडर और कॉम्प्लीमेंट के दोनों के मॉड्यूल की वैल्यू सेम आएगी। अगर सेम आती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिमाइंडर को भी एक बढ़ा देंगे और आंसर ऑफ कॉम्प्लीमेंट को भी एक बढ़ा देंगे, राइट? एक नहीं मतलब जो भी उसके करंट वैल्यू रहेगी उसके साथ जो भी पेयर बन पाएगा। दैट्स अ गुड सॉल्यूशन। अंडरस्टूड। Given an integer of length n where all the integers of all the integers of nums are in the range 1 to n and each integer appears at most twice. Return an array of all the integers that appear twice. You must write an algorithm to run that runs O of n times and uses the constant auxiliary space excluding the space needed to store the. Okay. 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 है। हर एक की फ्रीक्वेंसी are it in the list. ये हो जाएगी आंसर की। O of n टाइम में तो हो जाएगा कांस्टेंट ऑक्सिलरी स्पेस। ये हम चेक करेंगे, ये मेरे को बहुत अच्छे से नहीं चेक करना आता है। हाउ डू वी चेक दैट ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी है, कांस्टेंट है मतलब क्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ सिंपल। लेट्स अगेन यहाँ से कोड उठाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है कि मैं लिख नहीं सकता, बट मैं बहुत आलसी हूँ। सिंपल
and if frequency dot get n comma 0 is greater than 1, then answer dot append n. Return answer. Tutururu. हमने कुछ नहीं किया, फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लिया। जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसी की भी एक से ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है, और उसको फिर हमने आंसर में अपेंड करके आंसर को रिटर्न कर दिया। व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस? Space complexity for this. It's a nice space complexity found it's good. Answer stored because in the worst case all the elements appear twice and it's often frequency a dictionary storing in worst case all the number sizes often. Index marking. ये हमारा ओ ऑफ 1 में नहीं हुआ है, कांस्टेंट ऑक्सिलरी स्पेस में नहीं हुआ है, ओ ऑफ n में हुआ है। तो इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच देख लेते हैं। Space ignoring the output array works. या दैट्स मेरे को अप्रोच ऐसे ही समझ में आ गई। इससे कुछ नहीं करेंगे हम, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द फ्रीक्वेंसी एरे हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चलेंगे, जो भी हमारा इंडेक्स उसके इंडेक्स पे जाएंगे एंड इफ मार्क दैट एलिमेंट एज 1, एंड इसमें इंडेक्स के लिए हम एब्सोल्यूट को यूज़ करेंगे तो हमें -1 वहाँ पे भरना नहीं पड़ेगा, बट जैसे ही हमें माइनस मिलेगा इसका मतलब वो नंबर 2 बार आ चुका है। यहाँ पे जब हम उसमें स्टोर करेंगे तब वो ऑलरेडी होगा, तो वो हम उसको आंसर में अपेंड कर दें। सिंपल। x is less than 0, answer dot append, else num sort index equals to this. Good approach, I got it. सोलह हो गए, तो और कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन, फाइंड ऑल द डुप्लीकेट्स के डिफरेंस। इनवैलिड ट्रांजैक्शन वाला करते हैं। ये हो गया है, डुप्लीकेट्स हो गया है, इनवैलिड ट्रांजैक्शन possibly invalid if the amount exceeds $1,000 or if it occurs within including 60 minutes of another transaction with the same name in different city. I have a string transaction where transaction I consist of comma separated values representing the name, time, amount and city of the transaction. Return a list of transactions that are possibly invalid. You may return the answer in any order.
Alice 2800 MTV, Alice 5000 Beijing, Alice 20. The first transaction is invalid because the second transaction occurs within a difference of 60 minutes having the same name and is in a different city. Similarly, the second one is invalid too. सबसे पहले है name, time, amount and city. So Alice 2800 MTV. Why this is invalid? $1,000. Okay. इसमें more than 2 भी हो सकते हैं तो मल्टीपल रहेंगे सबका
डिलीट कर सकते हैं, मन नहीं कर रहा। अगर हम प्रीफिक्स सम की तरह इसमें है 4 0 4, एक बार करके देखता हूँ। नॉट अ प्रॉब्लम। क्या करते हैं कि इससे कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है।
फोर्स से तो हो ही जाएगा। फोर के साथ जितनी भी पॉसिबल सब एरर्स हैं, एक हो जाएगी ये, फिर एक ये हो जाएगी, फिर एक हो जाएगी, फिर एक पूरी ये हो जाएगी, एक पूरी ये हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा है मुझे। प्रीफिक्स सम तो यूज़ किया है। Implementation start with the initial prefix sum of 0 as you go each number in the array. Update the prefix sum by adding the current number. Calculate the remainder of the prefix sum when divided by k. Use a hash map to check if the remainder has been seen before. If it has, it means there are subarrays that sum to a multiple of k, and you increase your count by how many times this remainder has been seen. Update the hash map to include this new remainder. काउंट जीरो लिया, प्रीफिक्स सम लिया, प्रीफिक्स मैप लिया, दिस इज हैश मैप। सिंपल, सबसे पहले वही किया, फिर प्रीफिक्स में नम को जोड़ते गए, मॉड एक निकाल लिया है, मॉड इज लेस देन जीरो, मॉड प्लस इज इक्वल्स टू के। इफ मॉड इन प्रीफिक्स मैप काउंट प्लस इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स मैप मॉड एल्स। ये वाली प्रॉब्लम समझ तो आ गई, इसको थोड़ा सा मेरे को पेन पेपर पे करके सॉल्व करके रखना पड़ेगा। देखूंगा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यार। आजकल मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। थ्रीसम क्लोजेस कर देते हैं। मुझे पता है, मैंने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, 1 अक्टूबर को सॉल्व किया था, एंड काफ़ी लंबा सा सॉल्यूशन है। आपको सॉल्यूशन समझा देता हूँ उसका। तो इसमें क्या करना है, गिवन इंटीजर ऑफ लेंथ एंड इंटीजर टारगेट दे रखा है, फाइंड 3 इंटीजर्स इन द नम सच दैट द सम इज क्लोजेस्ट टू द टारगेट, रिटर्न द सम ऑफ द 3 इंटीजर्स, यू मे अज्यूम ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ओके, हमें क्लोजेस्ट वाला सम निकालना है। तो हमने क्या किया, एक पहले लेंथ निकाली, एक आंसर में हम बहुत बड़ा सा आंसर ले लिया, क्योंकि उससे छोटा ही हमारा, बाद में हम मैक्स कहीं पे कंपेयर कर रहे होंगे, देखना टोटल ऑफ मैक्स ऑफ आंसर, मतलब ज़ीरो नहीं कर सकते थे हमें,
ऐसा कुछ था कि आंसर से छोटा होना चाहिए और समथिंग, टारगेट माइनस आंसर और समथिंग। उसके बाद हमने सॉर्ट कर लिया। फिर फॉर आई इन रेंज इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई माइनस वन कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद हम चेक ही नहीं करेंगे अगर सेम ही वैल्यू है तो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, को मालूम है ये। चलो आज के लिए इतना ही। कल को लंबी स्ट्रीम करेंगे, कम से कम 3 घंटे की। ये क्वेश्चंस दोबारा करेंगे जो नहीं आए, और सम अदर क्वेश्चंस डायनेमिक प्रोग्रामिंग के तो मैं अभी नहीं करूँगा अटेम्प्ट, बट उसके अलावा बाकी जो भी हैं विल ट्राई टू फिनिश देम ऑफ टुमारो, ऑल ऑफ देम, 6 से ज़्यादा हों चाहे कितने भी हों, एंड देन वी विल मूव टू स्ट्रिंग्स। So yeah, that's it for today. Thanks for tuning in if somebody joins. अभी तक तो कोई नहीं आया, but it's okay. So bye bye. Thank you guys.